Should we focus on the supervisor? Should we focus on the department? Should we focus on the university that we want to target? Should we focus on our own background कि हम इस region से आते हैं तो क्यों ना एक regional topic उठा ले? या फिर it should be based on our research interest जिस पर हम actually passionately काम करना चाहते हैं? Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. My name is Muskan Khanna. I'm currently a PhD researcher at the University of Delhi. I cleared the UGC NET GRF examination last year in my very first attempt. Before starting to explain my PhD journey, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी दैट आई क्लियर्ड माय नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन इन अप्रैल 2023. Then I had my final MA exams, I guess during June, and I got my final MA results in August 2023. So what do you do after your MA? So I was very motivated, but at the same time scared that these few months will decide the course of my career. So, without any delay, I started to work on this entire PhD process. And it was the December of 2023 that I got finalized for a seat in Delhi University, even though my joining happened in February. But that is the official process that takes some time. But I was very happy by the end of 2023 that I did not take a gap year, or it did not take me एक साल 2 साल. लोगों को बहुत टाइम लग जाता है because it is difficult to get into a central university or a state university for that matter, even अगर आपके पास JRF है. What did I do exactly to get into a PhD program in my very first attempt without taking a gap year is what this entire video series will be about. यहाँ पर we will discuss the very important, the first basic step जो हम सबको करना है, that is making ourselves aware about this entire research process. Research proposal क्या है, कैसे बनाना है, and क्या सोचकर उस proposal पर हमें work करना है. Should we focus on the supervisor? Should we focus on the department? Should we focus on the university that we want to target? Should we focus on our own background कि हम इस region से आते हैं तो क्यों ना एक regional topic उठा ले, या फिर it should be based on our research interest जिस पर हम actually passionately काम करना चाहते हैं. जो पहला step होता है एक research proposal बनाने का, वो बहुत ज़्यादा externally motivated process नहीं होता. वो एक internally motivated process. I can no show you so many texts I've been receiving, चाहे वो LinkedIn हो, WhatsApp हो, Telegram हो, Instagram हो. People and scholars like you, all of you are texting me to just help you with the topic. हम किस पर रिसर्च करें, आप बस मुझे टॉपिक दे दो दीदी, प्लीज गिव मी अ टॉपिक मैम, एंड मैं उस पर काम कर लूंगा. बट यू आर नॉट गेटिंग द फैक्ट दैट आउट ऑफ द ब्लू कोई रैंडम टॉपिक लेने से आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा. यू माइट गेट इन टू अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और मे बी एक लीनियंट स्टेट यूनिवर्सिटी में आपका शायद एडमिशन हो जाए. बट इफ यू एक्चुअली वांट टू गेट इनटू अ रेप्यूटेड स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके लिए आपको खुद इस प्रोसेस में पार्ट लेना पड़ेगा एंड एक्टिवली पार्ट लेना पड़ेगा. एंड उसका फर्स्ट स्टेप है टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली इंटरेस्ट्स यू. अब जरूरी नहीं आपके पास कोई एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट हो, बट जब भी हम फॉर मी, एक होता है आपका क्रिएटिव इंटरेस्ट, एक होता है आपका एकेडमिक इंटरेस्ट. सो क्रिएटिवली वेन एवर आई यूज टू वॉच अ मूवी और probably read a book, I was always interested more towards the international side of things. British period films used to attract me a lot. I was like highly into all the Jane Austen films, and I was very clear that okay, I will probably want to look outside India if ever I plan on to research based on my creative interest. Academically, because मेरा background political science का रहा है, bachelor's भी masters भी, उसमें भी the papers that intrigued me the most वो हमेशा around diplomacy, security, international relations ही थे. So मेरा creative academic interest दोनों ही coincide कर रहा था, which made me very sure कि ठीक है, it is not going to be a political theory or Indian politics that intrigues me the most. It will be international relations जो मैं फाइनली परस्यू करना चाहूंगी. अब ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशंस इज अ ह्यूज, अ वेरी ब्रॉड डोमेन. सो उसको शॉर्टलिस्ट करना इज अगेन, आई वेंट बैक टू माय बैकग्राउंड एंड आई रियलाइज दैट ओके, बैचलर्स के टाइम पर वी हैड a paper called classical political philosophy. Even though it is not linked to IR, we did study some IR thinkers like Machiavelli. And we had a very creative assignment in LSR in my final semester. All of us had to write a 10,000 word original article
trying to mix a modern contemporary issue with that of a classical political philosopher. So during that time, along with my project partner, both of us decided that okay, we'll pick up Machiavelli and we'll try to incorporate some modern diplomatic elements to it. And उस time मैंने वो जो article लिखा था, I even got that article published. And if you want, you can read it here. So जो उस समय मैंने वो article लिखा था, that topic stayed in my head. But वो मैंने एक theory, realist theory है international relations की, उसके point of view से लिखा था. But I thought that that is pretty normal. वो एक bachelor's level का research था and it was good enough for that. But if I wanted to take that research forward, उसके लिए उसको change करना बहुत ज़रूरी था. I did not want to focus on one particular thinker अब. तो क्योंकि वो मैंने इतना इंटरेस्ट के साथ आई लिटरली रोट एवरीथिंग इन माय ओन वर्ड्स उस पूरे पेपर में व्हाटएवर आई वाज थिंकिंग बिकॉज़ again when I talk about my background I was very active on social media during my LSR days. I was handling around 3 to 4 different teams and departments. I was the social media head, and I also worked as the multimedia director of a Rotaract club. So my personal interest was also into social media. Then the movies, the books that I watched, I was very interested in period dramas, international phenomena, or whatever that happens. एंड academically also I are intrigued too. So इन सबका एक culmination मिलाकर मैंने अपना topic choose किया था, and that topic is yet to be obviously finally approved because I'm still in the process of my coursework, so I cannot like share the exact topic. But it was you know international relations का वो एक topic था with some digitalization and something on social media. I wanted to club it, and मैंने एक IR theory उसमें डाल दी थी. Now because I was so passionate about my topic, मेरा जो फोकस था वो ये था कि मुझे काम इसी टॉपिक पे करना है. आई वॉज वेरी फ्लेक्सिबल कि मुझे कोई भी यूनिवर्सिटी चलेगी दिल्ली के अंदर ही. आई वॉज ओके कि ठीक है डी यू में हो जाए. पर्सनली आई वॉन्टेड टू गेट इन टू डी यू ओनली बिकॉज मेरा पूरा बी एम ए सब डी यू से था. एंड फॉर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स ऑल्सो आगे आई फेल दैट इट इज बेटर टू बी इन दैट पर्टिकुलर जोन अगर मुझे आगे वही काम करना है. So I was not somebody who was always dreaming about JNU or anything like that. Even for my MA I was very sure कि मुझे DU से ही करना है. One reason was that it was far away from my place, so I did not want to travel so much and probably live away from home. So I wanted that. And second reason was that I was very comfortable and happy with my experience at Delhi University. So that was one of the reasons why I was not going crazy after JNU. But everybody has a different perspective, and the kind of research that JNU promotes and the kind of exposure that you get is, you know, incomparable. So obviously, no denying to that fact. बट आई वॉज वेरी क्लियर दैट जहां मैं इस टॉपिक पर काम कर सकूं मैं उस डिपार्टमेंट उस यूनिवर्सिटी में जाऊंगी बिकॉज आई वॉन्टेड टू वर्क ऑन दिस टॉपिक. नॉट जस्ट ड्यू या JNU बिकॉज आई वॉज पैशनेट अबाउट माई टॉपिक. आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी जाने में आई विल नॉट हेजिटेट because it is very difficult to get yourself admitted in a central university, especially first attempt में अगर आप कोशिश कर रहे हो. Most of my friends जिनका JNU हुआ है उनका second या third time में हुआ है because now वो same ही स्कूल का पेपर दोबारा देकर आ रहे हैं जो उन्होंने लास्ट ईयर दिया था. They knew how to prepare, they knew what kind of questions come, and ये papers easily आपको मिलते भी नहीं है. So if you have experience second time तो it's like 90% you will get in and आपका बहुत ज़्यादा chance होता है. बट आई वॉज वेरी क्लियर मुझे इसी साल घुसना है. इन 2-3 months का स्पैन मुझे करना ही करना है at any cost. So उसके लिए I was open. So मेरा पहला suggestion सबके लिए ये होगा before you go crazy after your topic and everything, be flexible about the fact that मुझे थोड़े ऑप्शंस खोल के रखने पड़ेंगे. बट उसका ये भी मतलब नहीं है आप अपनी सारा अटेंशन सारा टाइम 100 टॉपिक्स प्रिपेयर करने में लग जाओ कि आप 10 स्कूल में अप्लाई कर रहे हो तो 10 डिफरेंट टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हो. दैट वाज आल्सो समथिंग जो मुझे लगा लेटर रियलाइज हुआ वाज वन ऑफ माय मिस्टेक्स जो कि काउंटर प्रोडक्टिव रहा उस वे में. एंड आई न्यू सम ऑफ माय फ्रेंड्स जिन्होंने सिर्फ एक स्कूल टारगेट किया, एक प्रपोजल बनाया और दे गॉट इनटू दैट स्कूल इवन दो दे हैड नो नेट नो JRF. सो देयर कुड बी 2 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जब हम PhD को अप्रोच करेंगे. एक होती है सेफ स्ट्रैटेजी जो मुझे लगा मेरे लिए इवेंचुअली आई गॉट इनटू DU क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे स्कूल्स डिपार्टमेंट्स खुले रखे थे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एज वेल. एंड दूसरा एक ऐसा जिसने सीधा वन टारगेट किया था बट क्योंकि वो JNU से ही था एंड JNU में ही गॉट इनटू. सो अगेन योर बैकग्राउंड मैटर्स एंड your networking matters and how close you are to your professors, how much, not even close, कितना आप convince कर पा रहे हो उनको अपने research passion के लिए, because eventually they are the ones who have to take you. हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए एक रेगुलर डिसेंट रिसर्च प्रपोजल बनाना. रिसर्च प्रपोजल इज नॉट समथिंग दैट वो प्रोफेसर्स खोल कर पढ़ेंगे. एट मैक्स जब इंटरव्यू होगा दे विल ग्लैंस थ्रू इट, दे विल सी ओके इफ यू आर फॉलोइंग ऑल द प्रिस्क्राइब्ड मटेरियल्स जो उस पर्टिकुलर टॉपिक के एक्चुअली सबसे ज्यादा रिनाउंड ऑथर्स हैं, क्या आपने उन्हें पढ़ा है, उनकी रिसर्च आपने अच्छे से साइट करी है, हैव यू फॉलोड लाइक द बेसिक मैनुअल. सो वो एक बहुत ही
ऊपरी तरीके से उसको देखते हैं। एक्चुअल रिसर्च प्रपोजल रिटन नहीं है, इट इज द वे यू कन्वेड ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपके टॉपिक की, दैट इज द एक्चुअल रिसर्च प्रपोजल एंड नॉट द रिटन डॉक्यूमेंट। सो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा टाइम उसको ब्यूटिफिकेशन में, उसको अच्छा बनाना, जार्गन्स यूज करना, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक ले लेना जो कभी नहीं है, जिसपे मटेरियल नहीं है। These are the mistakes जो फर्स्ट टाइमर्स करते हैं। बट आई डोंट वांट यू ऑल टू कमिट द सेम मिस्टेक्स दैट आई डिड, जिसकी वजह से मे बी इट डिड नॉट हैपन इन फर्स्ट गो, मुझे सेकंड फेज में करना पड़ा, या इट टुक मी 3-4 months। सो फॉर दैट यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट दैट कोई आपको कोई उठाकर अगर टॉपिक दे देगा, उस पर आप पढ़ भी लेंगे। what is your inner motivation, what triggered you to choose this topic, and ये regardless of the universities ये पूछा जाता है why this topic, क्यों कर रहे हो। और अगर ये instinctively नहीं निकल रहा है अंदर से कि हाँ ये रीजन था। मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट देखा था जिसकी वजह से आई वेंट बैक टू माय बीए का टॉपिक जो मैंने एग्जाम लिखा था, एंड दैट इज हाउ आई कनेक्टेड कि नहीं यार मुझे इसी पर काम करना है, बिकॉज इस पर इतनी डेवलपमेंट्स और हो चुकी हैं। सो अगर ये ट्रिगर ही नहीं होगा, सो आई डेफिनेटली रिकमेंड यूज लिंक्डइन एज मच एज यू कैन। इफ यू आर इनटू आईआर, फॉलो द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज पेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इफ यू वांट टू अप्लाई इन डिफरेंट स्कूल्स। एंड कोई भी अगर आपका डिफरेंट, इफ यू आर फ्रॉम सोशियोलॉजी, इफ यू आर फ्रॉम फिलोसफी, और देर आर सो मेनी पेजेस, सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो कॉन्स्टेंटली आर्टिकल्स पोस्ट करती हैं, सो यू शुड बी फॉलोइंग दोज पेजेस। आप गूगल पे डालियो, जिस स्कॉलर्स, गूगल स्कॉलर पे यू कैन सर्च, यू विल फाइंड सो मेनी टॉपिक्स। एंड टॉपिक ढूंढने का प्रोसेस अपने में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, जिस पर आई विल टॉक इन डिटेल। सो आई वाज आल्सो कंफ्यूज लाइक मेनी ऑफ यू। जो ये आइडिया था टू इंटरलिंक माय बीए का टॉपिक एंड जो लेटेस्ट चीजें चल रही है, इट केम अ लिटिल लेट। उससे पहले तक आई वाज एज यूजुअल ट्राइंग टू फाइंड कि कहीं से आइडिया मिल जाए। बट फॉर दैट यू कैन सी, मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था जहां पर कहीं से भी मुझे कोई टॉपिक का आइडिया मिलता था मैं डाल देती थी, बिकॉज आई वाज नॉट श्योर कि क्या मेरा ये टॉपिक एक्सेप्ट होगा। यू कैन बी लाइक सुपर कॉन्फिडेंट इवन दो आई वाज पैशनेट अबाउट माय टॉपिक, बट फिर भी ये था कि अभी के लिए यार एडमिशन हो जाए, टॉपिक वील सी लेटर ऑन, एक बार हो जाएगा तो वील कन्विंस पीपल कि चलो मुझे इस पर काम करना है। बट क्योंकि इतने डाउट्स होते हैं, यू डोंट हैव पीपल टू टेल यू कि हाँ ये आप सही जा रहे हो या गलत। तो उसके लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू, बिकॉज आई वाज इनटू आईआर, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जैसे है, सो आई यूज्ड टू टाइप एंड राइट टॉपिक्स ऑफ आईआर एंड एवरीथिंग, साउ लिख दिया। तो वहां पर पीपल हु गॉट प्रोबेबली सिलेक्टेड लास्ट टू लास्ट ईयर, उनके टॉपिक्स साथ में लिखे होते थे एंड देयर रिजल्ट्स वाज पब्लिश्ड। तो उनका टॉपिक देखकर ही एक आइडिया मिलता था, ओह पीपल आर डूइंग ऑन मैरीटाइम डिप्लोमेसी, पीपल आर डूइंग ऑन दिस इंडोनेशिया इंडिया का रिलेशन और समथिंग डिफरेंट टॉपिक्स। तो आपको थोड़ा सा रिसोर्सफुल बनना पड़ेगा। व्हाट आई डिड वाज जेएनयू के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दे पब्लिश द लिस्ट ऑफ पीएचडीज दैट देव गिवन, सो यू कैन सी दैट। तो मैंने वो डाउनलोड करी थी एंड आई सॉ कि अच्छा ऐसे टॉपिक्स होते हैं, अगर सीपॉड में अप्लाई कर रहे हो, डीएडी में ऐसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में ऐसे टॉपिक्स अच्छा लोग लेके जाते हैं, दैट्स द टॉपिक। तो इससे आपको पता चलेगा अच्छा मुझे बहुत ब्रॉड टॉपिक नहीं लेना, मुझे बहुत लंबा टाइमलाइन नहीं लेना, आई हैव टू फोकस ऑन वन कंट्री। कंपैरेटिव कर रहा हूँ तो सिर्फ दो, मैं पूरे कॉन्टिनेंट पे रिसर्च नहीं कर सकता। So all of these ideas you will get in this particular website is also there, जहाँ से आप different thesis जो अभी तक publish हुई हैं, जो topics पे काम हो चुका है, you can get an idea and आपको पता चलेगा कि gap कहाँ पे रह रहा है। ठीक है, so this is the process of finding a topic, so that you can do by googling, by going at sites जहाँ आपका subject से related papers publish होते हैं, articles publish होते हैं, current affairs सबसे important है। आई मीन एंड इट्स नॉट जस्ट आईआर और पॉलिटिक्स जिसके करंट अफेयर्स आते हैं, इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, हर तरीके के न्यू कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, पीपल आर पब्लिशिंग आर्टिकल्स ऑन दैट। सो आप डेफिनेटली यूज इंटरनेट टू योर मैक्सिमम पोटेंशियल एंड देन जो आपको स्ट्राइक करे कीप राइटिंग इट डाउन, सो दैट जब आप सोचे कि नहीं यार मुझे किस पर शॉर्टलिस्ट करना है, यू हैव अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जिसके थ्रू आप टॉपिक शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, हमें एक रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है।